Hello everyone. Greetings from Gunjan Tripathi and Medhaj Family. Wish you all a very happy International Women's Day. Today is 8th March and we all are celebrating International Women's Day in full steam, in full enthusiasm and with full highest of spirits. And why this panel discussion and why this special panel? I just wanted to start with because the issues around women are plenty and it's a big topic. It's a big umbrella. And so I was actually thinking because we also wanted to participate in a positive way and in a meaningful way. So I was thinking, what should we do and who should we involve in the panel? So there were multiple options because I have been part of such panel discussions in past, which are typically involve either the business leaders, women business leaders, or top performing employees of the company whenever it is being done in a corporate setup. But then we at Medhaj always try to do it in a more meaningful way. And it is very clear that I find myself slightly ahead in the curve as far as Medhaj is concerned regarding the women power. It's no brainer. Medhaj is, everyone knows in the industry, in the marketplace, that Medhaj takes care of its women. Rather, women power is stronger than men power at Medhaj. And we have, in our senior leadership, there are a lot of women participation already there. Our founder, one of the founders, Alka ma'am, is involved into every great thing, every initiative around women. She is, and then we have our head HR, our marketing, Shweta, our old employees, seasoned employees at the top of the ladder in the company, Kritika, Harshita. So we have, so women power, strengthening of women power is not an issue at Medhaj at all. So what I thought, we have a lot of men performer also who are actually at the top ladder in the company. And I realize that we at Medhaj know very well that large part of their horsepower is coming from their better halves. So actually that makes me thinking always. And when I was planning around this panel discussion also, a strong thought was coming to my mind that employment term is not between an employer and the individual. It is actually practically it is between an employer and the employee with his family, his or her family. Because when a man or woman goes to the workplace, entire family is supporting to ensure that it happens in a meaningful way. And whenever that support comes in a strong way, in a positive way, then only that is directly linked to the performance of that employee within the company. When I look at the top talent within Medhaj, and I can clearly see that there is 100% positive correlation. Correlation is a statistical concept. And there is 100% positive correlation between the performance of the top talent and the quality of the support from his or her spouse. To that extent, I thought these are the unsung heroes or heroines of Medhaj, which probably we never got a chance to bring them forward. And in a way, this is the secret sauce of the Medhaj also. Because a lot of people ask that within 14 years of the existence, how did Medhaj cover its journey? How did Medhaj become #1 consulting company in power sector and also one of the leading consulting company in the other infrastructure sector? And what is the secret sauce behind our success? And truly speaking, the support from the spouses, making them the top talent of the company, is definitely one of the secret sauce in my view. So without much ado, let me go one by one and allow our eminent speakers who are the spouses of our top talent. And when I say spouses, it does not mean that they are housewives or they themselves are only supporting. Each one of them has a very meaningful existence professionally also in their own lives, along with supporting their spouses. Some of them have already worked in a IT setup. Some of them are in the education sector. So they themselves are very accomplished professionals in their own lives, apart and bringing up their family, bringing up their kids in a very nice, very efficient way, and supporting and bringing a lot of horsepower to their spouses in helping them becoming the top talent.
So going one by one, I'll start with, before I go to the panelists, let me introduce Sakshi Pradhan, who is our head HR. And Sakshi herself is an example role model for a lot of, for all the women employees in the company. So I'll start with Sakshi. Sakshi, why don't you start with your introduction? And then we'll move to Archana, Sapna, Aarti, and Chetali in this order. Hello, sir. Hello, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sakshi Pradhan. I'm working at Medhaj from last 9 years. I'm working here as HR head from last 5 years. And before that, I was working as an engineer. And thank you so much for adding me here. And I wish everyone a very happy International Women's Day. Ashra, unmute. Yeah, hi. Well, I would like to start by thanking the Medhaj group and especially Gunjan sir for giving us the opportunity to speak our views out on this Women's Day, which is of course very, very special for all of us since it's just for us. Well, my name is Archana Madan and my husband's name is Siddharth Mehta. He has been associated with the Medhaj group for the last 11 years. But it really appears that we have been together as a family forever. I have deep respect for Mr. Samir Tripathi, which is the CMD sir. He's not just a mentor for my husband, but for me as well. We have learned a lot from him, and I think lots more to go. So that's all. I would like to just share one quote on this Women's Day, which is Yatra Naryantu Pujate, Ramante Tatra Devata. That clearly means where women are honored, divinity blossoms there. So I think this is it for the Women's Day. Thank you. Excellent. Thank you, sir. Sapna. नमस्कार, मेरा नाम सपना सिंह है। मैं बेसिक एजुकेशन में यूपी गवर्नमेंट के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जूनियर हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर के डेजिग्नेशन पे पोस्टेड हूँ। मेरा स्कूल अलीगढ़ में ही है, मेरे घर से करीब 12 किलोमीटर है। और मेरे हस्बैंड मिस्टर ललित सिंह, जो कि मेधज से मतलब कहना चाहिए कि जब मेधज कॉन्सेप्चुअलाइज हुई थी तभी से मेरे हस्बैंड मेधज के साथ हैं। बट अगर देखा जाए तो 15वां साल 15th ईयर उनको चल रहा है मेधज में। और अलीगढ़ में मैं अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ की वाइफ, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे 2 बच्चे, हम सभी लोग साथ रहते हैं। और मेधज में मतलब मैं कहना चाहूँगी कि समीर सर और गुंजन सर, अलका मैम और भारती मैम, आप सभी लोगों के एथिक्स पे ही हम लोग चल रहे हैं, तब जाकर के कहीं हम लोग मतलब अगर कहना चाहिए कि सपोर्ट सिस्टम हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने हस्बैंड को या किसी भी चीज को, तो वो सिर्फ आप लोगों को रोल मॉडल बना करके ही हम लोग कर पा रहे हैं। तो थैंक यू गुंजन सर टू सिलेक्ट मी फॉर दिस। थैंक यू सपना। आरती। हेलो सर। हेलो सर, माई सेल्फ आरती गुप्ता। सर, मैं बेसिक एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर हूँ और सर मैं यहाँ रायबरेली में पोस्टेड हूँ। एंड माय हस्बैंड नेम इज रितेश गुप्ता और मेधज में है। रितेश, ऐसा लगता है कि रितेश 1 या 2 साल, रितेश की जो वर्किंग है 1 या 2 साल पुराना कंपनी में है। और कुछ दिन पहले मैंने रियलाइज किया कि रितेश इज आल्सो 5+ years old इन द कंपनी एंड रितेश हेड्स आवर फाइनेंस। ओके, थैंक्स आरती। चेताली। Hi. First of all, I would like to thank you, sir, and Medhaj group. That you give us, you are just giving us the opportunity to sharing our views in front of you. So, my name is Chetali, and I'm from Uttarakhand, Nainital, and my husband is a part of Medhaj since last 10 years. His name is Gaurav Lohani.
So, and I've also been working. So, Medhaj gives a lot of support to him and his employees, and it keeps soft corner towards his employees so that they can work with free mind. So it's a very good thing, and it's good for company growth. So that is all about. So thank you, and I wish you all a happy International Women's Day. Thank you. I think this was a good round of introduction. So before we go to the second round of discussion, I just wanted to share some stories which are always there and on top of my mind. We have a very senior employee who has been almost since the beginning of the company, based out of Bombay. In the initial years of her career with Medhaj was her first job, 4th or 5th year only. She was approached by a MNC consulting company, Big Four, one of the Big Fours, and given an offer, why are you stuck up with a startup? Why don't you join us? Multiple times CTC and all. And her response to the employer was, to the company was, कि आपको मेधज ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन करिए, यहाँ का एनवायरनमेंट आपको बहुत पसंद आएगा. एंड आई डोंट नो, आपको तो मुझे रिकमेंड करना पड़ेगा इंटरव्यू प्रोसेस में पूरा, और लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी फ्रीडम है कि आई कैन एक्चुअली रिकमेंड टू माय CMD, and because I am recommending and he has full trust that I will not recommend to anyone who is undeserving, your chances will be very high of getting absorbed in Medhaj. तो कई बार ऐसे मेरे पास कॉल आते हैं कि आप लोग अपने यहाँ के जो विमेन एम्प्लॉइज हैं या टॉप टैलेंट है, आप लोग उनको मोटिवेट कैसे रखते हैं? While the world is struggling with the high attrition rate, all the best of the companies are struggling with the high, and attrition is least of our problem, last in the problems we worry about. In fact, कई बार लोग बोलते हैं सर उसको इस कंपनी से जॉब ऑफर आ रही है, कॉल आ रही है, and I get happy because I will have problem if my people are not being approached by our competitor. It means there is something wrong with the competence or talent of our people. I want our people to be approached. That reinforces my confidence also in the quality of our people. And at the end of the day, the secret sauce is our environment. And where, in fact, I have examples from this group also. I will not take the specific name of where companies, the individual has been approached by the MNC consulting, and where the spouses were very instrumental in holding them back in the company, because spouses were clear कि मेधज से अच्छा environment कहीं नहीं मिलेगा. And thank you, my salute to the spouses for their faith in our CMD sir, because that is probably the biggest secret sauce of the company, because the way he holds the entire Medhajites together, and Medhajites does not mean our direct employees, their entire family together. And that is why we differentiate in terms of retention of people and our HR policies. So anyways, thank you for everyone for your contributions in maintaining this this culture of the company. Okay, so let's move to the second round. अब आप अगले राउंड पे चलते हैं, जहाँ पे मैं चाहूँगा कि टॉपिक पे या इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओवरऑल या तो ब्रॉडर टॉपिक पे या जो हम थीम लेके चल रहे हैं कि कोई एग्जांपल, कोई स्टोरी, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, एनीथिंग इंटरेस्टिंग you start sharing as an opening remark or as an opening comment. So Sakshi, I would like to start with you only because you have been with us since early on. Thank you, sir. Stories while working in Medhaj, तो हमारे पास हर रोज एक नई स्टोरी होती है, बट 9 साल के करियर में मेरे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मतलब मेरे लिए सबसे चार्मिंग स्टोरी जो है वो मेरे प्रमोशन की है और मेरे करियर ग्रोथ की है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ मेधज में. आई हैव ज्वाइन इन 2013 एंड सिंस देन आई वाज वर्किंग एज एन इंजीनियर. एंड जिस टाइम पे आफ्टर दैट जब हमारे HR हेड ने रिजाइन किया था, तो CMD सर, गुंजन सर और अलका मैम का ये विजन था कि मेरे नाम उनके लिस्ट में आया ऑप्शंस में कि इसको भी हम कर सकते हैं. एंड जब उन्होंने प्रपोज किया तो आई ऑप्टेड फॉर दैट. एंड उसके बाद से 2017 में आई वाज प्रमोटेड एज HR हेड.
तो वो दिन मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ जब ये अनाउंसमेंट हुई थी। एंड मेरे लिए सबसे क्लियर कट एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट का, वुमेन को एम्पावर करने के लिए सोसाइटी में और मेधज में और कॉरपोरेट कल्चर में। एंड जब कोई भी फीमेल कॉरपोरेट में और घर में एम्पावर फील करती है तो वो डेफिनेटली और लोगों को भी एम्पावर करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे साथ ये जितनी सारी वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स नहीं है, ये सब होम मेकर्स हैं जो होम भी मेक करती हैं एंड अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ हमारे जितने टॉप परफॉर्मिंग लीडर्स हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं और ताकि वो लोग बखूबी परफॉर्म कर सकें। तो ये मेरी एक स्टोरी थी। तो थैंक यू सर। Okay, that was great, Sakshi. Moving on to Archana. Archana, you are a real role model for most of the spouses who know you, and it's definitely for us, because the way you support Siddharth. Siddharth actually joined about more than 11 years ago, and today he is the COO of the company. I think 2 months ago only he has been promoted to Chief Operating Officer, which is one of the biggest promotion we have seen for anyone within Medhaj. And we know Siddharth's performance. Siddharth is always able to give 200% to the company, to his profession, and because huge horsepower coming from Archana. So I would be very keen to hear from you some story, something, what exactly inspires you to do that. Absolutely. So thank you again for giving me this opportunity to express my feelings. Well, ever since Siddharth has joined Medhaj, I mean, first of all, I would like to share that I was working as a team leader training communications with HCL Technologies, and it was a wonderful job. My career could have been on some heights today, but I had to leave my job because taking care of the daughter was more important and significant at that point in time. So initially, I felt that leaving a job and sitting at home and just taking care of the household chores is not a very wonderful idea. Siddharth joined Medhaj. I mean, things really got easy and simple for me, and I also got so involved in everything he does. If he has a problem, I have to back him up. He asks for my suggestions for everything. And of course, I do a little bit of his writing work and back him for anything and any help that he needs. And I make sure that whatever he does to perfection, because I think perfection is something which is very, very important for a bright career. And today, since he's been promoted and serving as a COO, I feel proud. And I feel that my sacrifices of leaving the job and taking care of the house have not gone waste. I think I took a good decision at that point in time. Women empowerment does not just mean that you work in an office or you are getting a salary, but it means that you're providing full support, upbringing of a child, and taking care of your family is equally important and relevant. And I would also like to thank Medhaj family that I've never felt, away from the Medhaj group. I've always been a part, directly or indirectly, which makes me feel proud. Thank you. Excellent. In fact, to your point on you being involved a lot in his work also, I was there with Siddharth when a tender was financial bid was supposed to open at 3:30, and 3:31 your call came on his phone asking what happened, and he was I could see such a delight on his face, telling you, yes, we have got it. Phone rak. Yeah, you know what? So, we discuss everything, and Siddharth is so much involved in his work always that the day tender is floated, from the day the tender is floated to the day we get it. I mean, he doesn't sleep well, he doesn't eat well, he only eats, I think, probably on the day when we get a tender. So he's so deeply involved, and with his kind of involvement, I also equally get involved, and we enjoy it. We enjoy it together. I think this is something which is very, very exciting, and it fancies me also. very good, great. Thank you, Archana. Thank you, sir. अब आते हैं सपना जी पे। सपना, आप इससे कुछ बोले उससे पहले मैं बताऊं कि ललित है कंपनी के साथ डे 1 से नहीं बोलूंगा। आई प्रोबेबली जब कंपनी कंसेप्चुअलाइज कर रहे थे CMD सर, तब थॉट्स
के लेवल से ही ललित हैज बीन विद अस. तो ललित इज इन DNA of the company. ललित and और इनफैक्ट आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड. सपना का एग्जांपल हर मीटिंग में CMD सर देते हैं कि बहू अगर किसी को हो, किसी घर की या वाइफ हो किसी की, तो probably you have been a consistent role model, बहू और वाइफ, from the day one for us, the way you have supported. क्योंकि 14 years बाद हम सब बैठ के कंपनी के सक्सेस के बारे में बात कर पा रहे हैं, इतने सारे एग्जांपल्स, इतने सारी स्टोरीज के बाद. लॉट ऑफ ब्लड, लॉट ऑफ sweat has gone into our success till date, and you have been integral part of that. क्योंकि ललित को ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर उसको किसी नॉर्थ ईस्ट के टेरिटरी में किसी सिटी में 1.5 महीने के लिए रुकना है तो बस रुकना है तो रुकना है. He has never discussed any of his pains, problem with us, but we know that behind that ability of Lalit to do that, you stand as a pillar of support. कि हाँ, you make everything happen as if nothing is required, but it is not the reality कि nothing is required. And the way your kids are coming up so well, hats off to you, Sapna. And I don't want to steal your thunder. अब आपको बोलने देता हूँ. लेकिन my salute to you and my gratitude to you for everything you do, every moment, every minute, every day for Medhaj family. Thank you, sir. Thank you, Medhaj family. Thank you, Samir sir. Actually, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सैल्यूट ना आप लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि सैल्यूट मुझे नहीं करना चाहिए, एक्चुअली सैल्यूट मेधज फैमिली को करना चाहिए. और मेधाजाइट मतलब अगर इन अदर वे मैं कहूँ कि मैं इस तरीके से सेल्फ डिपेंड हुई हूँ या सेल्फ कॉन्फिडेंट हुई हूँ, तो ये सब मैं बाय बर्थ नहीं हूँ या ऐसा पहले से नहीं है. सब कुछ मैंने आकर के यहीं पे सीखा. और एक इंसिडेंट है, क्योंकि इंसिडेंट मैं बताने ही वाली थी. ये मेधज परिवार का एक हिस्सा बनने से पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मेरी शादी से पहले, मतलब शादी जिस उसमें हुई, जिस तरीके से हुई, समीर सर ने 25 डेज पहले की बात है, मेरे हस्बैंड का फोन आता है. वो बोलते हैं कि शिखा सर तुमसे बात करेंगे. तो मैंने कहा ठीक है. मैं थोड़ा नर्वस थी कि सर पता नहीं मुझसे क्या बात करेंगे, जैसा हमेशा फील होता है नर्वसनेस. तो मैंने फोन लिया, बात की सर से. सर ने बस मुझसे एक ही सेंटेंस में पूछा, शिखा शादी करनी है या नहीं करनी है ललित से. तो मैंने कहा जी सर करनी है, बिल्कुल करनी है सर. तो सर बोले कि ठीक है, डेट डिसाइड हो गई है, अपने आप इनमें से एक डेट फाइनल करना और उस डेट को तुम्हारी शादी है. मेरे ख्याल से 5 मई ठीक रहेगा और तैयारी करो. तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब इतना जल्दी 20-25 दिन में, अभी जन्म कुंडली भी नहीं मिल रही है, गुरु भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है. पूरी फैमिली बड़ा कंफ्यूजन में है कि शादी होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. सर ने तब डिसाइड कर दिया. उसके बाद जब फोन कट हुआ, फिर मैंने इनको दोबारा कॉल किया. मैंने कहा कैसे होगा ये सब, पॉसिबल कैसे होगा. तो बोलते हैं अरे तुम टेंशन मत लो, सर ने कह दिया तो हो जाएगा, बस ये समझो तुम तैयारी करो, लखनऊ आना है, यही शादी करनी है. सर आप बिलीव नहीं करेंगे, लखनऊ आने तक मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव जितने भी आए थे, सब मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, शादी कहाँ है, कैसे है, क्या अरेंजमेंट है, हम कैसे पहुंचेंगे वेन्यू तक. मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मुझे बताया ही नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा. बट जब हम लखनऊ पहुंचे, मतलब मैं बता नहीं सकती, जो अरेंजमेंट था ना, वो एक एसोसिएशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने ऐसा अरेंजमेंट कभी नहीं देखा. इवन मेरे रिलेटिव्स में भी नहीं देखा. जब मैं वहां पहुंची तो जो सपोर्ट था, जिस तरीके से पूरे मेधज फैमिली मिलके काम कर रही थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी शादी इतनी अच्छी होगी. उसके बाद हमारी शादी की वीडियोस और एल्बम देखी जाती थी. सब लोग पूछते थे ये कौन है, ये मेधज है, ये मेधज में काम करते हैं, ये मेधज फैमिली है. इस तरीके से मतलब मेधज मैं हिस्सा बनी वहां का. सर ने ही मुझे हिस्सा बनाया मेधज परिवार का, और आज मुझे इस चीज का प्राउड है कि मैं वहां का, उस फैमिली का एक मेंबर हूँ. जो भी सपोर्ट इनको मिलता है या ये एकदम फ्रीडम से अपना डिसीजन लेते हैं,
इसके पीछे भी कारण आप ही लोग हैं, क्योंकि मेरा जो वर्किंग प्लेस है या मेरा जो घर है उसमें मेरे हस्बैंड कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। हर चीज की फ्रीडम उन्होंने मुझे दी हुई है, कैसे करना है, क्या करना है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि या तो ये कह लीजिए मैं भी वर्किंग हूँ, मुझे भी नहीं उनका ऐसा कोई अपोजिशन फील होता, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा कोई खास उसमें रोल नहीं है, ये आप लोगों की ग्रेटनेस है कि आप लोग मुझे इतना वो करते हैं। बाकी सब मैंने जो भी कुछ सीखा है समीर सर से, अलका मैम से, आप लोगों से, पूरी मेधज फैमिली से ही सीखा है। आप लोग और मैं तो क्या, अभी आपने नाम लिया श्वेता, कृतिका, ये सभी लोग डे वन से कंपनी के साथ हैं। ये लोग हमेशा जब कभी भी थोड़ा बहुत मुझसे डिस्कस करती हैं तो जितना ये अपने आप को सेफ और जितना खुश फील करती हैं, इतना किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फीमेल नहीं फील करती। तो इस चीज के लिए सिर्फ मेधज ऑर्गेनाइजेशन ही खुद में इस चीज का मतलब क्रेडिट उसी को जाता है। सैल्यूट टू मेधज, सैल्यूट टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सपना, वेरी टचिंग स्टोरी। एंड जिस तरीके से आपने नरेट किया शो करता है कि यू वुड बी अ ग्रेट टीचर आल्सो एट योर वर्क प्लेस। क्योंकि फीलिंग्स, सॉरी गो अहेड, बोलिए। मैं बताना चाहूंगी कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो हर एक महिला के अंदर होता है, इनहेरेंट होता है। ये एक अद्भुत, एक ऐसी वो होती, पावर होती है जो सिर्फ एक वुमेन के अंदर होती है। तो इसके लिए, और ये सब चीजें हम अपनी मदर इन लॉ, मदर से सब हमारा इनहेरेंट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, तभी मेधज इतने अच्छे से काम कर पाता है। और फिर क्यों ना हो, मेधज हम लोगों की खुशियों का हमारा इतना ध्यान रखता है। देखिए एक चीज और बताऊंगी मैं इसमें बीच में, शोचन्ति जाम्यो यत्र विनयो यत्र विनश्यायाशु तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सर्वदा। अर्थात इसका मतलब है कि जिस कुल में स्त्रियां शोक में डूबी रहती हैं उस कुल का नाश होता है, और जहां स्त्रियां खुश रहती हैं वो दिन पे दिन प्रगति करती है। तो हमारी खुशी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है, वो उसके पीछे हमारी खुशी है। हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, आप लोग हमेशा हमको खुश रखते हैं, हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे बैकएंड पे खड़ी हुई है, हमारे सपोर्ट पे खड़ी हुई है, तो हमारा इतना सा सपोर्ट तो सब बनता है कि हम लोग बिना किसी बॉर्डर के अपने हस्बैंड को काम के लिए उनको कोई छोटे छोटे इश्यूज में ना इन्वॉल्व करें, ना ही कोई इस तरीके का कोई टेंशन दें, वो लोग फ्रीली काम करें, तो इतना तो बनता है सर। थैंक यू सो मच। फीलिंग्स होना एक बहुत बड़ी बात है, और इस फीलिंग्स को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना उससे भी बड़ी बात है। तो आपने दोनों बखूबी किया, वेरी नाइस ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट वंस अगेन। और एक नया श्लोक भी सीखने को मिला। दो अर्चना ने बोला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और तो उससे एक वो डेफिनेटली एक्चुअली सीएमडी सर हमारे समीर त्रिपाठी सर की डे वन से और जो एक फोकस रहा है, फोकस वर्क कभी नहीं रहा, फोकस ऑर्डर कभी नहीं रहा, और फोकस कभी भी किसी को फेल्योर पे नहीं डांटा गया। सक्सेस के लिए न लड़ने पे जरूर सुनाया जाता है, पुश किया जाता है। जब कोई फेल होके आता है तो आई डोंट थिंक कि कभी भी किसी को एम्बेरस किया जाता है। तो और फोकस हमेशा से, और इन पिछले जैसे जैसे मेधज और पुरानी होती जा रही है, जनरली ऐसा होता है जैसे जब समाज आगे बढ़ता जाता है तो वैल्यू सिस्टम कमजोर होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सिस्टम पे फोकस और बढ़ता ही जा रहा है, संस्कारों पे फोकस और बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट प्रोबेबली यही एक रीजन है जो कि वी आर कंटिन्यूइंग टू सर्वाइव इन द मिडस्ट ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज अराउंड अस। और मार्केट प्लेस आसान नहीं है, एनवायरनमेंट आसान नहीं है, सिचुएशंस आसान नहीं है, और हम लोग भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज में रहते हैं। लेकिन थैंकफुली जो हमें अभी तक हम सक्सेसफुल, हमारी सक्सेस रेट बरकरार है, बढ़ती ही जा रही है। और इसके पीछे कंसिस्टेंट एक ही चीज रही है, हमारे सीएमडी सर का फोकस ऑन वैल्यू सिस्टम, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आज अभी जब भी वो सबको एड्रेस करते हैं या रिव्यू करते हैं
तो कुछ चीजें उन काम से ज्यादा डिस्कशन वैल्यू सिस्टम पे ही करते हैं। कहीं ना कहीं उस समय हमें लगता है कि क्या इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते वही बात कहीं हर किसी के सिस्टम में आ गई है, हर किसी के डीएनए में आती जा रही है। प्रोबेबली दैट वुड बी द रीजन बिहाइंड आवर सक्सेस। और उनका भी ये कॉन्फिडेंस है, जैसे कि हमारे परिवार में अपने हमारे बच्चों में हमें मालूम है कि हमारी बात एक बार को हो सकता है ना सुने, लेकिन वीटो ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि एक बार भैया का सीएमडी सर का जब इंस्ट्रक्शन आएगा हमारे परिवार में तो वो चीज माननी पड़ेगी, लोग मान जाएंगे और खुशी खुशी मानेंगे। वही कॉन्फिडेंस हमारे कंपनी के पुराने एम्प्लॉइज को अपनी फैमिलीज को भी लेके है कि हमारी बात, ललित को ये पता है कि मेरी बात सपना माने चाहे नहीं माने, सिद्धार्थ को पता है कि मेरी बात अर्चना माने चाहे नहीं माने, लेकिन फाइनली अगर समीर सर ने कह दिया तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ग्रेसफुली, चाहे वो आरती हो, चाहे चैताली हो, चाहे वो सपना हो, चाहे वो अर्चना हो, मान लेंगी। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ लंबे एसोसिएशन से नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों से आता है, और दैट इज प्रोबेबली आवर रीजन फॉर सक्सेस। एंड बट थैंक यू, वेरी वेल स्पोकन सपना। मूविंग ऑन टू आरती। आरती, रितेश को 5+ years हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो day 1 से हैं, और मुझे तो the way he has aligned himself with the Medhaj value system, उसके पीछे, और he also has lot of appreciation for you. I don't know वो कितना communicate करता है कि नहीं करता है, लेकिन हमें पता है कि because you both are at different places as far as your work places are concerned, lot of coordination is required, और आप बहुत कोऑपरेशन आपसे मिलता है उसको, और पर थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगी अपने इस अवसर पे? सबसे पहले तो महिला दिवस की सबको बधाई। महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, हर एक महिला के लिए हर दिन एक स्ट्रगल वाला दिन होता है, और मेरे लिए एक रितेश के साथ जब शादी की बात चल रही थी, एक है पुराना 2.5 साल से शादी के लिए नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, और वो वजह यही थी कि लखनऊ से बिलोंग करते थे, मैं कन्नौज से, और मेरे मन में भी ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ये प्राइवेट सेक्टर में, तो कैसे सब चलेगा। धीरे धीरे 2.5 साल के बाद इन्होंने हाँ बोला शादी के लिए। सारी चीजें अलग थी, कल्चर भी अलग था, रहन सहन भी सब कुछ अलग था। इवन इनको इंग्लिश बोलना आता है बट मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इतना डिफरेंस था हम लोगों में। उसके बाद जब शादी हुई है तो यही एक टेंशन था दिमाग में, कैसे चलेगा, क्या होगा। लेकिन शादी के जस्ट बाद ही इन्होंने मेधज ज्वाइन किया है। मेधज ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि हम दोनों के अंदर इतना बदलाव आया है, और हमें भी लगता है ये कि हाँ मेधज ज्वाइन किया है तो जो चीजें हम लोगों में डिफरेंस थी वो सब एक हो गई हैं। जो विचारधारा अलग अलग थी हम लोगों की वो एक हुई हम लोगों की। जैसे हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इनका प्राइवेट सेक्टर है, तो अलग अलग जो थी, और अब सब एक हो चुका है, और वो मेधज की वजह से हुआ। जैसे मैं शंकर भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन जब से मेधज ज्वाइन किया इन्होंने, पहले शायद मुझे नहीं पता कि ये रितेश शंकर जी की पूजा करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन जो एमडी सर हैं, समीर सर हैं, वो शंकर जी की बहुत पूजा करते हैं, मैंने सुना है। मेधज ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जो शंकर जी को माना है, जब पहले मैं बताती थी कि शिव जी की आराधना करो, ये तो नहीं मानते थे, लेकिन जब से मेधज ज्वाइन किया है तब से शंकर जी को ये बहुत मानने लगे हैं। तो बस यही कुछ है जो सब अच्छा हुआ है, मेधज ज्वाइन करने के बाद ही से कुछ बदलाव आया है, नहीं तो हम लोग अलग ही अलग रहते थे। पहले मैं कन्नौज रहती थी, ये लखनऊ रहते थे, तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, बहुत सारी थी बात। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है मेधज आया जब से लाइफ में। आपने तो ऐसा पॉइंट बोल दिया जिसके आगे सब बाकी सारे पॉइंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। शिव जी को ही जब आप ले आए डिस्कशन में, ये कोई तो शिव के आगे तो कोई कुछ टिकता ही नहीं है। बहुत अच्छा बोला।
आरती और कुछ और कोई पॉइंट और कोई अच्छा मैं सर मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ मुझे नहीं समझ में आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैं सुनती जाता हूँ, बोलती कम हूँ थोड़ा सा। जब तक आपने बताया नहीं तब तक मुझे पता नहीं चला कि आप नर्वस हैं। अब आपने कहा कि आप नर्वस हो जाती हो, वरना मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी बात से, किसी कम्युनिकेशन से ऐसा लगा कि आप नर्वस हैं। तो मे बी ऑल इज इन माइंड, यू जस्ट हैव टू गेट दैट आउट ऑफ योर माइंड। ठीक है, बहुत बढ़िया बोलती हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हैं और बहुत ही सार्थक बोलती हैं। मेरी सर मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला लेकिन हाँ इतना है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से, अपने हस्बैंड से। रितेश ऑलराउंडर पर्सन। रितेश तो ऑलराउंडर है। रितेश को देख के मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि रितेश इतना अच्छा डांस कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। रितेश इतना अच्छा टीटी खेलता है, मैं टीटी नहीं खेलता। मैं सिर्फ काम कर सकता हूँ अपना। और रितेश इज ए मल्टी फैसेटेड, वेरी ऑलराउंडर पर्सन। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेधज में, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और एज फार एज वर्क इज कंसर्न, मैं तो उसको बहुत ही सुपर कंप्यूटर मानता हूँ। नंबर्स और एफिशिएंसी में ही इज वेरी टॉप नॉच। और but thank you for all your support. I know things are at times difficult for you, but you can see from this discussion कि there are a lot of people who join you in this journey. तो आप लोग एक दूसरे की, और आप लोग इंस्पिरेशन है पूरे मेधज में बहुतों की। तो क्योंकि ये जो सक्सेस, रितेश इज वेरी यंग ऑल्सो, और इस यंग एज में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का हेड होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और एंड ही इज डूइंग इट वेरी वेल। सो थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट ऑन दैट। Okay, so now over to Chaitali, and Chaitali is I don't know, Chaitali, you may remember कि I had attended your marriage and Gaurav and your marriage function at Kathgodam, and which was one of the very memorable event for me. Gaurav के लिए मैं ये कहूँगा कि Gaurav definitely one of the silent persons in the family, in the Medhaj family. He comes across as one of the very silent person, but he's very aggressive mentally, thought process wise, and at his work. And one of the things which I always tell all the young professionals whenever I have a chance to coach, that if one thing you can give to the organization you work for, you will get the best from the organization. And what is that? The flexibility. When your bosses, when your management knows, oh, this person, this professional is offering flexibility, then the confidence level completely shoots up for that professional. And Gaurav has given that to us from the day one. महीनों गौरव क्लाइंट साइड पे जाके, और हमें पता भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता कि गौरव कहाँ है, दमन में है, सिलवासा में है, नॉर्थ ईस्ट में है, रांची में है, and never makes an issue out of that. There are people who do the same thing but not as silently as Gaurav does, but it does not mean that that is not recognized or not acknowledged by the organization. पर मैं भी कभी-कभी सरप्राइज रहता हूँ कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कोई बंदा दे कैसे पाता है. And today I can see the reason, because in the entire world watching this program will be able to see that reason. You are behind that flexibility, because I'm sure that support is coming from you, because without that no one can offer that amount of that magnitude of flexibility to the workplace. So hats off to Gaurav, hats off to you for all your contributions, all your dedication. Now over to you for your remarks on this topic. So actually, I'm not so much involved, because मैंने जो भी सुना, I've heard from Gaurav only about the Medhaj. So I've heard from Gaurav. It seems like that Medhaj gives hassle-free environment to its employee, so that they work with free mind. So and it's a very important aspect for growth of any company, I think. So and it's especially for girls, it's a very it provides a very safe environment to the girls, as I have heard from Gaurav. So, and I've heard many good things about Medhaj from Gaurav. So
and he has a support of 2 women actually, his mother and of course me. And the way we handle all the house chores and all the responsibilities of house, so that is the reason he work. It's a kind of support to him, that he work hassle free. So that is all I know about Medhaj. And thanks to Medhaj for giving such good environment. And I don't have such a story क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा time नहीं हुआ है मेधज के साथ जुड़े हुए. So that is all about. Thank you for your comments, for your remarks, which instills confidence in me for your continued contribution also. It is all based on I've heard from Gaurav only, as you know. I think that is one. Gaurav ने तो बहुत नहीं बताया होगा क्योंकि Gaurav told me the things because you hardly see me there actually, and अभी ज़्यादा time नहीं हुआ है मुझे मेधज family को join किए हुए, so it is all that. Okay. Okay. So let's move on to the next round of our discussion. This is not a discussion. This is going to be a quiz. The way I plan to structure is it's not a multiple choice. It's not at all in KBC format. And I will just ask a very easy question. And the fact of the matter is I did not have answer to any of the questions which I have set prior to setting the question. So I also was clueless about these questions. So, so if that gives you any solace, in case you are not able to answer, don't blame yourselves, because even I did not know the answer beforehand. Okay. But the way I plan, I'll just read out the question, and we will go in. I will in this round, like Sakshi, Archana, Sapna, Aarti, and Chitali. First opportunity will be given to Sakshi, and then to Archana, then to Sapna, then to Aarti, Chitali, if any one of them in this order are not able to answer. So first question is, when is International Women's Day celebrated? We all know it's March 8th. Just in case you thought this was the question. No, this was not the question. That was the first line of the question. So the question is, when was the first or the earliest version purportedly Women's Day organized? When was the first earliest version when the Women's Day was organized? Very good. So first option will be given to, first choice will be given to anyone if volunteer. And so Archana, yes. I think it happened in the year 1975, and the same date, May 8th. No. Yeah. I think yeah. May 8th, 1975 was the first time when Women's Day was celebrated. Okay, I will hold on to this. I will not comment. But anyone else wants to try? When was the first or the earliest version of Women's Day organized? It's 1909. Who was this? This was Sapna? I think 1911. Mm-hmm. I think so. Correct. 1909 is the correct answer. And what Archana actually said 1975, that is also an important date. Just so hold on to that date. I'm not saying more because that might be useful information in future. So question number 2 is, so this first, which was in 1909, was by whom? This was organized by which organization? So which country or which organization? Which organization? Google is not a good idea. Yeah, of course. Thinking of something. Either you know or you don't know, but if you may like to use Google, I mean, at least the speed will be tested. No, Google is not allowed. I should not come to know at least. Sapna, I know you are trying to. It was celebrated in America, but I don't know which organization. It was celebrated in America. Yes. So one point to Sapna so far as for the first question. First question was answered by Sapna, right? Me. Yeah. No, sir, Sakshi. Sakshi, sorry. Sakshi's work is always under-recognized
HR always feels that way. Okay. So anyone for the second question? By which organization? So it happened in America and United Nations. I don't know. No. So, Chitali, any? No idea, sir. I've heard said umpire, something like. Aarti? No idea. It was okay. Either you know or you don't know. I at least did not know earlier. So, Socialist Party of America in New York City. When did UN? Next question is, when did United Nations begin celebrating International Women's Day? So that I mentioned, I think that was 1975. Yeah, that's correct. 1975 is this is when the United Nations had started celebrating. Yeah. Okay, good. The next question is which is the only country where women don't have legal right to vote? And that is for a reason. It's not about right or wrong, good or bad, but that is the only country where women don't have legal right to vote. I think it's Saudi. I just hold on to that. Again, you give very tricky answers. I can't comment on that answer for some right valid reasons. Because that is the answer to the next question always. No, I didn't say that. कौन सी country है जहाँ women don't have legal right to vote? Aarti? Vote. Work or vote? Sorry, work was not work. Vote. That was a slip of tongue. Okay. It is before anyone tries to. Huh? Vatican City. Are how knowledgeable you are. Oh, great. Google, powered by Google. And why? And why is that so? Tell me that also. सबसे smallest country है. So okay, that's the right answer is Vatican City, because actually the only election which happens there is for the selection of Pope, and that happens only when the Pope dies. So, and cardinals elect the next Pope, and cardinals are men only, and that is why the women don't have rights to vote. So it's not about right or wrong. It is the way it is designed. But I don't know how I forgot it. So I visited the Vatican City and it was amazing. And yes, of course, it's very Pope dominated. Yeah, when you were visiting it, I think you had your earplugs on, so you were not listening to any history or any stories. Yeah, there. I missed it. Okay. Which Muslim majority country was the last one to give voting rights to women? And when? Voting rights to women and when? कौन सी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जिसने सबसे लास्ट में वोटिंग राइट्स दिए अपनी विमेन पॉपुलेशन को, महिलाओं को, और कब? Is it Saudi now? Yes, it is Saudi. Yeah. Saudi Arabia, and in 2015. Yes, absolutely. And when is Indian National Women's Day celebrated? Observed. When it is celebrated, or when was it first celebrated? No, when is it celebrated every year? Every year, it's on the 8th of May. Yeah, so that is the 8th of March. 8th of March. Actually, 8th March is International Women's Day, and Indian Women's Day is celebrated, observed on February 13th to commemorate the birth anniversary of Sarojini Naidu. Absolutely. Yeah. Actually, I had read this many years before, but I had also completely forgotten. So we should all, as Indians, as sensitive Indians, we should know the difference. That for us, both the days are equally important. International Women's Day on 8th of March and February 13th is Indian National Women's Day.
Absolutely. Okay. So So I how is the think scoreboard? all the answers which you replied were correct in the second attempt. So you the only definite firm answer came from Sapna. So Sakshi, Sapna should be the first or Archana should be the first? I think Sapna should be first, right? Sapna Yes, should be sir. first. So Sapna is winner, and But I'm no Google person. Huh? I didn't use Google. and Archana is runner, and Sakshi is cheater because she because she answered from Google right in front of everyone. So no points to Sakshi. Anyways, good But, participation. sir, I would like to share that I'm proud that I could read your mind. What was coming up next? Yeah. So you're absolutely okay. Anyone? So I think anyone wants to add anything before we close the discussion? Any closing remark from anyone? Sir, I think it's a very wonderful decision, and this celebration was much needed. We really wanted to share our views regarding Medhaj, and our husbands and our. It's not just the husbands; the whole family is working for Medhaj because we are united at heart. So that's very, very important. I think it's a good thing to do, and it makes us feel more connected to the company. And we are proud to be women. And yeah, I know it's true empowerment when women are appreciated, when we are discussed, and when we are respected. Thank you. Excellent, great. Yeah. और कोई कुछ कहना चाहेगा? Okay. I think मैं एक point आया था और हमेशा से आता रहा है जो कि मैं before I close the discussion I wanted to bring up the difference between there are two school of thoughts. One school of thought says that we should support women in all possible ways for them to be successful at workplace and with some special policies, with some special rights, some advantage over men. And second school of thought, in fact, amongst women leaders only there are two school of thoughts. Second says no, we should talk about gender neutrality, and once women are at workplace, then no differentiation, no discrimination should be between men and women. They both are equal. They both get equal pay. So why should there be any differentiation? So my view, my thought is that the first one, and the reason why equality does not make sense on this topic, in my view, is because there is no equity. Equality is for rights, and equity is for the system of processes. Is there equity in our system? And then because issue is about inequality or instability, which is a bigger problem for the women employees. We have so many examples, like Shweta. Shweta had to discontinue her job after a few years. She was one of the rock stars in the company, as from a performance standpoint. And then for some personal reasons, she took a break. Her career discontinued for 2 years. And then she joined back after 2 years, Medhaj, and today she is one of the top performers again in the company. So there was an element of instability. Now people might say that instability can be there for men also, but where is it more? It is more with the women employees, because people when they have to raise the child, then they have to take a career break at times for various reasons. The opportunities of that instability is more. The occurrence is more with the women employees, and that is why I say that we don't have equity in the system till the time we are in a position to say that women and men, for both of them, our systems, our environment have equity. We should not talk about equality. And that is why we need to celebrate, we need to embrace our policies, our organizations with special policies for women, so that they are actually brought up to the same level of ecosystem, of environment, and when we are able to do that, they perform much better than men employees.
So that was my take. Why this is why I feel that whatever you do for women employees is always less only, and that is this whole thought process comes from our own CMD, because we are also son of a working women, and my mother also started her job after a lot of hardships in her life when my father expired. And then so we understand this, we have a first-hand experience of the lack of equity, lack of the presence of instability in a women's life as far as the career is concerned. That is why some push is required in terms of the policy and all. So on that note, I will bring this discussion to an end, and thank you once again, everyone, for all your support. And I hope this discussion inspires a lot of other people watching this discussion, and they also realize how important is it support from women, support from spouses to make the career rock for their better halves or for their counterparts. I will not say better half, sorry about that. I want to say something, sir. बोलिए. सर, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि मेधज डे पहले की तरह मनाया जाए, और जिसमें आपका वो जो सस्पेंस साउंड होता है ना, धक 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 धक, दोबारा से सुनने को मिले। ऑर्गेनाइज कीजिए, हम सभी लोगों से मिल सकें। इस बार आई एम ऑल्सो होपफुल कि कोरोना का थर्ड वेव अब खत्म ही हो गया है और थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मलसी, तो होपफुली वी शुड be able to celebrate, but that announcement, that decision has to come from our CMD sir, but आपकी feelings को pass on कर दिया जाएगा, and thank you for your personal appreciation for that dhak dhak moment. Okay, so we will wrap up this session, and this brings us to an end of this session. Thank you Sakshi, thank you Archana, Sapna, Setali, Aarti. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.